What is your long-term vision going forward? It is the social motive or profit earning the motive also? Hello, Namaskar and welcome to the Startup Garh Show presented by Bizz Gyaan. तो गाइस आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ेंगे मिसेस सरताज लांबा मैम, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ बडी कैब्स एंड केयर। तो गाइस उनका जो स्टार्टअप है बडी कैब्स, इट इज वर्किंग इन ए सोशल डोमेन प्रोवाइडिंग मोबिलिटी कैब सर्विसेज to the vulnerable section of the society, to elderly age people, differently aged people, or the kids who cannot do their works on their own. So quite an interesting and a social startup it is, and working in the healthcare segment. So आज इनकी कहानी जानते हैं द स्टार्टअप गढ़ शो पे। काफी इंटरेस्टिंग और सोशल इम्पैक्ट वाली पॉडकास्ट होने वाली है, तो कीप वॉचिंग टिल एंड। नमस्कार मैम, वेलकम टू द स्टार्टअप गढ़ शो प्रेजेंटेड बाय बिज़ ज्ञान। थैंक यू सो मच मुकुल जी, एंड बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, और आपका भी ये स्टार्टअप ही है, एंड दिस इज वेरी नाइस कि स्टार्टअप्स के लिए और स्टार्टअप से ही, तो थॉट इज वेरी नाइस। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। वेलकम। तो मैम बिजनेस की बात करने से पहले मैं कुछ आपके बारे में जानना चाहूंगा कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा, फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, और ये स्टार्टअप इकोसिस्टम में कहाँ से लैंडिंग हुई? अच्छा मुकुल जी, पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो मैंने पढ़ा है, लिखा है और जो मैं आज कर रही हूँ उसका कुछ भी एक दूसरे से ताल्लुकात नहीं है। व्हाट आई स्टडीड, व्हाट आई वर्कड एज एंड व्हाट आई एम डूइंग टुडे, नथिंग इज टुगेदर। तो एक एप्पल के सीईओ आप सबने सुना होगा, वो कहते हैं कनेक्टिंग द डॉट्स। तो आज जब मैं देखती हूँ पीछे, तो बेसिकली आई कैन कनेक्ट ऑल डॉट्स कि मैंने उस टाइम जो चीज करी, आज मेरे को दिखता है दैट इट हैज बीन वेरी फ्रूटफुल इन माय लाइफ। आई एम अ ग्रेजुएट इन बीएससी फ्रॉम एमसीएम डीएवी एंड आई एम फ्रॉम सेक्रेड हार्ट, चंडीगढ़ सेक्टर 26। आफ्टर दैट उस टाइम हमारी उम्र में शादियां जल्दी हो जाती थी, तो हमारी शादी हो गई एक फौजी से। तो लाइफ जैसे जैसे आती रही वैसे वैसे हम एंजॉय करते रहे। एंड ड्यूरिंग माय टाइम व्हेन आई वाज इन द आर्मी, आई मीन अलोंग विद माय हस्बैंड, आई एम स्टिल विद माय हस्बैंड, बट नाउ ही लिव्स wherever he is posted and I am here with the kids and my in-laws. तो मैंने बीएड भी करी, स्कूल में भी पढ़ाया, एंड ड्यूरिंग दिस टाइम आई रियलाइज्ड कि मेरे फादर मदर ने, जिन्होंने मेरे को इतना पढ़ाया लिखाया, हमारे को इतना नॉलेजेबल बनाया, तो इसका बेटर यूज करना चाहिए। एंड दो टीचिंग इज अ वेरी नोबल प्रोफेशन, बट आई वांटेड टू डू समथिंग मोर देन दैट। अभी भी मेरे को ये कंसेप्ट समझ नहीं आता कि हम बच्चों को इतना पढ़ाते क्यों हैं। लेट देम बी फ्री, व्हाई बर्डन देम? आई मीन एक्सप्लोर, it is all about exploration, and I think our thought process should change. All mothers and schools should also come together and formulate a strategy where you have the children more intelligent, where they can apply their knowledge and taking this forward. So मेरे पास 2-3 लेडीज आई थी जिनके पास मैरिड लाइफ में कोई इश्यूज चल रहे थे, तो उनको ठीक नहीं जम रहा था। एक की तो डॉटर के साथ शादी हुई, तो लड़का छोड़ के चला गया। सो इन दैट प्रोसेस आई वांटेड टू गिव देम अ जॉब, बट आई कुड नॉट। तो फिर एक, जब आप एंटरप्रेन्योर होते हो तो आपके दिमाग में ये आ जाती है कि मैं दूसरों से मांग रही हूँ, तो अगर मेरे में हिम्मत ही नहीं है तो मैं दूसरों को कैसे मांगूंगी। तो दैट इज हाउ आई स्टार्टेड माई जर्नी एज एन एंटरप्रेन्योर. I used to work somewhere else and then I used to give them a job, and I was always supported by my dad, my father. He is also in the Air Force. तो मेरा सारा family फौजी background है. My brother is in the Air Force, my father in the Air Force, my husband in the army, my father-in-law in the army, और मेरा नान का खानदान सारा आर्मी में ही है. So I can say that it is a martial family. हाँ, it's a martial family. But okay, then another thing, आप जो पूछ रहे हो, अभी भी मैंने पढ़ाई करी. अभी मैंने MS6 स्टडीज करी और लिख के पेपर क्लियर किया. सो दैट आई फील वाज, आई वुड हैव नेवर सैट फॉर दिस पेपर हैड आई बीन 30 years बैक. आई वुड हैव सेड कौन करेगा पढ़ाई, बट अब करी मैंने, क्योंकि जब आप चाहते हो तो आप कर लेते हो. सो ह्यूज एक्सपीरियंस यू आर हैविंग मैम. तो मैम ये सारी चीजें करने के बाद स्टार्टअप में एंट्री कैसे हुआ? अभी आपका स्टार्टअप है बड़ी मोबिलिटी केयर, तो ये स्टार्टअप में आपका एंट्री कैसे हुआ और इकोसिस्टम में कैसे लैंडिंग हुई? ओके, आप स्टार्टअप कब शुरू करते हो? या तो आपको लगता है उसकी जरूरत है, या आपको लगता है आपका थॉट इतना अच्छा है
कि Like it it can will change the world. change the ecosystem, it can change the world. So मेरे केस में मेरे को लगा कि हमारे को ये ज़रूरत है. I mean, this is what we needed. And this is from practical example. I had shifted here along with my kids to take care of my in-laws. My father-in-law was totally on bed. तो ये मैंने देखा कि ये सिस्टम ही नहीं है हमारा. मतलब अगर आप हॉस्पिटल जाते हो एंड somebody is on the bed totally, तो एक सीमलेस सा सिस्टम नहीं है जिसमें आपको व्हीकल भी मिल जाए, आपको केयर टेकर भी मिल जाए और आप निश्चिंत होके यू कैन टेक केयर. I mean, every time for a person to be displaced to come and take care is very difficult in today's world. पहले के जमाने में एक कमाता था 10 खाते थे, आजकल 9 कमाते और एक को भी नहीं खिला सकते. So the trend has changed like that. So it became very difficult for us. We were actually, God willing, we had all the financial resources. तो हम उनको फाइनेंस के हिसाब से तो we could take care. But there was no system as such कि जिसमें एक ही प्रोसेस हो जाए, एक ही गाड़ी आ जाए, एक ही केयरटेकर हो जाए, एक ही सिस्टम हो जाए, एक ही घर में अटेंडेंट आपको. Everything was bits into pieces that you have to keep asking people for everything. So and there was no reliability. So that is the reason that I started with this. Okay. So ma'am, currently what are you doing in your startup Buddy Mobility Care? Currently, Yes. because of Buddy Mobility Care, I'm talking to Mukul Lamba and I'm here at this talk show. And बहुत सारी दुआएं मिलती हैं लोगों से जिनको आप एक्चुअली टच करते हो. Then I never realized कि ये we'll be touching lives to a greater extent. And लोग अब outside India से फोन करते हैं, they call up कि मैम आपकी सर्विस चाहिए. We are not that we are on the app or we do so much of marketing. It is just by word of mouth कि लोग आ जाते हैं, हमारी जो छोटी सी वेबसाइट है उसको देख के आ जाते हैं and then they get in touch. और हम differently abled और women सबको take care करते हैं as one. पूना में भी अभी मेरे जो clients हैं वो basically UK और US से आते हैं. Okay. And so we are tying up with hospitals now to go further. Okay. So you are working in a health tech startup, which is indirectly providing a social cause also. Yeah. Yes. So ma'am, what is your long-term vision going forward? It is the social motive or profit earning the motive also? देखो सस्टेन करने के लिए तो प्रॉफिट चाहिए होता है. Yeah, definitely. वो मैंने सोशली एंगल करके देख लिया है. उसमें आई एम ओनली किलिंग द पीपल हु आर वर्किंग विद मी. पीपल जो मेरे साथ जुड़ते हैं, हर एक चीज के एक्सपेंस होते हैं. तो यस, वी आर फॉर प्रॉफिट ऑल्सो, बट वी हैव अ मोर सोशल कॉज देन प्रॉफिट अर्निंग. Without getting profit, you cannot sustain, and we want this. I want this to sustain, and for the whole Indian ecosystem to be dependent. I mean, dependency से हटके independent होना. Okay, nice. So ma'am, you choose entrepreneurship, which itself a very difficult part. And being a woman entrepreneur and managing the family responsibilities and family commitments, and also managing our business, it becomes very difficult. So how did you manage the family commitments and your startup? मैं ना बड़ी पिक्चरों के डायलॉग बोलती हूँ and I read a lot of books and all also. तो वो शाहरुख खान नहीं कहता जब आप किसी चीज को चाहते हो तो पूरी कायनात आपको दिला देती है. And it is absolutely true. So if you really want to do what you want to do, everything will fall into place. आपको कोई जरूरत नहीं होती किसी चीज को छोड़ने की. सबको साथ लेके जाओ. Everybody feels a part of the process. And then earlier I used to manage my family. Now the family manages me. Okay. So it is like that. It is a very strong support system. उनके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते. तो my husband has been very very supportive. मैं तो बोलूँगी जितने भी मैंने मेरी लाइफ में have been very supportive. My dad, my brother, my husband, my son, and women are the power in our house. तो I think ठीक चल रहा है, सही चल रहा है. Nice one. So ma'am, you are into the business and corporate world since a decade, and lot of women want to start something over there और सब कुछ अपना करना चाहते हो. वुमेन क्या सोचते हैं कि मैं कुछ अपना करूं, मेरी कुछ हॉबीज हैं वो भी परस्यू करूं, पर जैसे ही जब मैरिज हो जाती है, फैमिली कमिटमेंट्स आ जाती हैं, तो आप इस पॉडकास्ट के थ्रू वुमेन को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो कुछ अपने बलबूते पर करना चाहती हैं, अपना स्टार्टअप करना चाहती हैं, अपनी कोई हॉबी परस्यू करना चाहती हैं, तो आपका उनको क्या मैसेज है?
अच्छा मुकुल जी, आपने बोला मैंने 10 साल पहले शुरू किया, यस एब्सोल्युटली ट्रू. सो आज से आप 10 साल पहले देखो तो कुछ भी नहीं था. देयर वाज नथिंग नोन एज वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप. देयर वाज नो freebies, there was nothing, there was no classes, there was nothing to do to learn about it. So in today's time I would say कि जैसे जो generation, coming generation है, there that generation is also very open to adapting. Even the boys, I would say, I mean, as mothers, we have raised up very good boys. So they are actually allowing their wives and sisters to go outside and try. And they support their mothers also to try and support. And girls have become very independent. So they know how to make a choice. तो वो choice बना लेती हैं. And they do it. So I would like to tell all the young girls and all the women who want to start that there's no age to do anything what you want to do. हमारी लाइफ का रिचार्ज बटन होता है. किसी को पता थोड़ी हमने कब जाना है. तो जब तक यहाँ पे हो, enjoy every day, live your life. आज जियो और कर लो, जैसे tomorrow it's not going to happen. And I would also say that there are a lot of courses, online courses available, lots of incubation centers now. So you must go and avail, meet, network. So networking is your net worth, so you should believe in that and do that. तो मैम अभी हम क्या देख रहे हैं कि वुमेन इकोसिस्टम भी एक स्टार्टअप पे ग्रो कर रहा है, क्योंकि अभी रिसेंटली मैं टाई के इवेंट में जब विजिट कर रहा था तो आई मेट एन वुमेन एंटरप्रेन्योर हु वाज अबाउट 35 year old and she started her bakery business. So she converted her passion into the startup business. So what advice to women is that continue your passion, follow your passion, and business lies in your passion also. You can follow that also. See, in my book that I've written, Two State Life, I've written a book also, and this has all come through my experience. उसमें मेरी quotation लिखा हुआ, entrepreneurship is your relationship with passion. Yeah. So basically, it depends on how passionate you are about your work. You will go through it, and आप भी ये कर रहे हो, ये भी आपको पैशन है, ये भी आगे जाएगा. तो पैशन के बगैर पहले क्या होता था, लाइवलीहुड होती थी कि देयर वर ओनली टू प्रोफेशन. नाउ देयर इज नथिंग लाइक दैट. सो यू फॉलो योर ड्रीम्स. सो मैम हम बिजनेस की ओर आते हैं. तो व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम यू आर ट्राइंग टू सॉल्व योर इनोवेटिव मोबिलिटी कैब बिजनेस और द हेल्थ केयर बिजनेस यू आर टॉकिंग अबाउट? We are basically trying to put in a lifestyle solution, lifestyle change. So we want to upgrade your life and don't be dependent. It has got nothing to do if somebody can take you or not. And even if you are wheelchair bound or you're specially abled or there's no problem. You can use any services, and this ecosystem will become so comprehensive that India, I'm sure, would be the biggest such ecosystem that will take care of healthcare and mobility together, because maximum population is in India now. Okay. So ma'am, what is the differentiation in your mobility care services as compared to the traditional ambulance services or the cab services? Okay, आप एम्बुलेंस सर्विस को बोलते हो तो आपके घर के बाहर एम्बुलेंस आती है टक 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 करके, ठीक है. तो आपकी थॉट प्रोसेस क्या होता है कि कोई बीमार हो गया यार, लेने आए हैं उसे. हाँ. दुआ वाली फीलिंग आती है कि हाँ. हाँ, कुछ ब्लेस कर रहे हैं इनको. हाँ, तो उस बंदे को कैसे लगेगा? अच्छा लगेगा डेफिनेटली. उस बंदे को, जो बंदा होता है उस कंडीशन में, उसको लगता है कि मैं पता नहीं वापस आऊंगा कि नहीं आऊंगा, क्या होगा क्या नहीं होगा. Yeah, so but when the buddy comes, if you see my name, that is buddy. Buddy is also come from Ami only. That's a smiling kind of life giving, that positivity, that we are there, we are going to take care, it's okay. Life is good. So from one concept of thought going backwards, you go forward. Okay, yes, we can make a change, we can live a life, we are not dependent on anyone. तो that is a life change. अच्छा, और अब normal cab के साथ हम किसी के साथ compare नहीं कर रहे, but we give a value added service that first of all, it is run by a woman. I am a woman, so women is associated with care. And अगर मैं हूँ, I'm the first lady into transportation and this care business together, so it has to be different. It has to have a face. It will be more value. It will be more connecting. और एक वो होता है कि तार आपकी जुड़ती है किसी के साथ, तो वैसे करके चलता है thought process. And ये मेरे को feedback आया है. Okay. That people feel more reliable, more connected, and they like the word also, buddy. तो मैम ये बिजनेस आप किस तरीके से कर रहे हैं? एनी वेबसाइट, मोबाइल ऐप और थ्रू द टेलीफोनिक ऑर्डर्स?
ये हम कर रहे हैं वर्ड ऑफ माउथ, ओके वर्ड ऑफ माउथ से कर रहे हैं एंड ईमेल्स भी आ जाती है and people just come from the small little website that I have. App is there but it is still in the testing phase and by this year end we should be on the app properly. So what I am getting is that you are providing mobility care services to the differently able people or the senior citizens who face problem in their daily life for mobility solutions. आप मोबिलिटी सॉल्यूशंस में सीनियर सिटीजन्स अकेले नहीं आते, वो कोई भी आ सकता है. आजकल लोग पीजीज में बहुत ज्यादा रहते हैं, so they are basically alone, they don't have anybody else also to take care of them. और differently abled लोगों और some people during the course of life they are actually okay but they undergo some operation or something or they have had an accident, so they cannot walk spine below, so they are on the wheelchair only. So I have got my vehicles modified जिसमें wheelchair सीधे अंदर चली जाती है, slip up हो जाती है and you can clamp it up and go. Very nice. तो इसमें ऐसे भी लोग आए हैं जिनकी नीज में प्रॉब्लम होती है, वो भी जाते हैं. अभी हमारी सर्विसेज लेके एंड माय ड्राइवर इज ट्रेन्ड एज अ केयरटेकर, उसकी फर्स्ट एड में ट्रेनिंग वगैरह सब हो रखी है. तो केदारनाथ बद्रीनाथ भी गया है और पूरा फुल राजस्थान का टूर भी करके आई है. तो आई वुड से माय व्हीकल इज वेरी क्यूट एंड गोइंग प्लेसेस and we are making a difference. Great. So ma'am, what are your views on the growing healthcare sector in India and the growing startup ecosystem in our country? A growing startup ecosystem in our country, I think our country has got a very robust and a very inclusive startup system now, and with so many schemes that our honorable Prime Minister has put in place. So uska ripple effect is happening in 2 tier cities also, that we can see that Chandigarh and then now smaller places like Bathinda also are looking forward for startup policy and people want to get associated. आजकल youth में ये भी है that we want to do something on our own, so that's a good thing to do and parents are also agreeing to for the child to do whatever they want to do. So it's, in my opinion, India is going to be the superpower in the coming few years in finance and in business field. Next 5 to 10 years we would be number 1 in the world. Recently शाह अमन गुप्ता also posted, ये हमारा समय है, अब भारत का समय आ गया है, हम विश्व पे राज करेंगे. So मैम फ्यूचर्स में हम इसमें क्या सर्विसेज और लॉन्च करते देख सकते हैं? इसमें हम करेंगे जैसे आपने ये करा, तो we are going to launch this buddy talks. Okay. So we will have buddy talks, then we will have buddy community where we will have also have volunteering services in that and buddy vacations. Okay. तो मैम करंटली आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं इस बिजनेस के रिगार्डिंग और फंडिंग क्या आप सीख कर रहे हैं इस बिजनेस में करंटली? एक फ्यूचर प्लान्स में एक और भी है, हमने डिजास्टर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर डालना है इसके अंदर, दैट हाईवे के ऊपर आपका कोई भी एक्सीडेंट हो, कुछ भी हो, सो यू कैन जस्ट गिव अस एन SOS कॉल. देन वी विल आल्सो बी हैविंग पैकेजेस इफ समबडी टेक्स अ सब्सक्रिप्शन मॉडल. तो आप सिर्फ हमको जो भी मैसेज के साथ होता है आप एक बीप करोगे, सो द बॉडी caretaker, the cab, everything will reach your place when required. Nice. We are trying to reduce the time limit also, so we are going to put that disaster management software. So India has to be the best now, and I'm good with it. So ma'am, it was really great talking to you at our show, and I wish you all the best for your business. You keep creating this social impact and motivating young and enthusiastic entrepreneurs all around Tri-City and India. So once again, thank you so much for being with us on the Startup Garh Show. Thank you Mukul ji, thank you so much, and it was a pleasure speaking to you. और एक और चीज़ है कि आप इस young age में आपने इतना अच्छा, I mean I also saw your online classes that you're holding for CA. Actually it is a very small thing, but it is the need of the hour. जैसे हमारे जैसे लोगों को भी चाहिए होता है 12 में ATG कैसे fill up करें या फिर कंपनी कैसे फॉर्म करनी है, what are the compliances. So very nice concept, very nice startup you have. Thank you so much for having me, and thank you everyone. Thank you.